अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो लेक्चर है वो बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एंड हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग के हवाले से। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेक्चर लेट्स हैव अ क्विक लुक अबाउट द सिलेबस जो कि यूएचएस की तरफ से रिकमेंडेड सिलेबस है। मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी द पीडीएफ ऑफ दिस सिलेबस। क्विकली मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इसमें। सो ओवरऑल जो आपका सिलेबस है उसके टोटल 6 यूनिट्स हैं, और अगर आप ईच यूनिट में से काइंडली अगर आप देखें यहाँ पे तो हर यूनिट में से दैट इज़ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 1 जो कि हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का बेसिक पर्पज़ ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोवाइड यू द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन with detail as well. And if you have any problem you can write down in the comment section and we will provide you and assist you how you can answer those questions as well. So first syllabus ये आपके सामने है। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो विल प्रोवाइड यू इन द पीडीएफ फॉर्मेट एंड यू कैन डाउनलोड इट एज वेल। सो चैप्टर नंबर 1 है, 5 MCQs होंगे एंड देयर विल बी 1 शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, एंड सिमिलरली सेम मार्क्स जो वेटेज है वो चैप्टर नंबर 2 की है, चैप्टर नंबर 3 की है, and if we talk about chapter number 4 and 5 and 6 as well. Okay, so there is a complete syllabus recommended by UHS. Now what we are going to do, as I told you earlier, that this essay, this specific lecture will be about BS Nursing Expository Writing second semester students, and here it is written that first of all we will discuss unit wise important questions. Okay, and after that I will provide you the detailed answers as well. So that lecture is very important for those students who are going to have the BS Nursing second semester final exam जो कि विद इन अ वीक हो रहा है. सो आई एम गिविंग यू द श्योरिटी कि इफ़ यू विल गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस and after that you will follow the answers which will be given you at the end of the lecture, so you are gonna easily crack your final exam. So let's start without wasting much time. So first of all I will give you the complete list of the question. Here is a complete list of questions, and the questions are in sequence from the book, and there are total 30 plus questions, and if you go through all these questions and you make notes as well, and you can easily crack your exam. So first there is a list of questions provided for all the students. You can clearly see these questions are based on in a sequence from each chapter, you can say. Okay, so there are total 6 questions, and there are total 36 questions, and as you know in your exam there are 6 chapters. So these 36 questions have been from those 6 chapters. Okay, so here's a list as you can clearly see in front of you, and there is a list of 20 questions here, and after that total 37 questions. So let's talk these questions one by one. So we have the first question from chapter number 1, that is define writing and explain the aspect of writing. एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आता है वो इसका पर्पज़ है राइटिंग के हवाले से, ऑडियंस, टोन, वॉइस, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी एंड कोहेरेंस. Students, these are the most important components of writing. Okay, and now you have to describe each one in detail one by one. Okay, so first of all you must know the definition which has been given you over there. I will read it for you. Writing is the process of expressing ideas, thoughts and information in a clear and organized manner through language. Okay, and as I told you उसके aspects क्या होते हैं. First, purpose हो गया. Of course you must have a reason of writing. Audience, intended readers. So purpose of writing describe करता है कि reason for writing क्या है. Audience, for whom the writer is writing that material. Okay, tone, writer's attitude toward writing. Okay, and we have already discussed in the previous lectures, but you will have this question in the coming questions section as well. So tone is an important component of writing. Then voice as well, and content, ideas and information. It should be relevant to the topic. Organization, logical structure follow करना चाहिए जिसके अंदर आपको coherence और cohesion के बारे में आगे चल के बताया जाएगा. Clarity, we need clear expression as well, and coherence, logical flow of ideas होना चाहिए. तो first question के अंदर
you have been asked about writing and explain the aspects of writing. So you have to go through this question with the detailed answer which has been provided here. Okay, you don't need to do anything extra. The next question number 2 is we have defined expository writing, as you all know, and explain its purpose with example as well. So this is a very important question. It has come in the last year as well. So here is the definition: expository writing explains, informs, describes a topic objectively using facts and evidence. So basically a thing which you need to explain logically, it should be based on facts. You can defend a topic based on the evidence with examples. वो आपका expository writing के अंदर आता है. Evidence is very important. Purpose to inform, clarify and explain हो गया. Example is given over there explaining how photosynthesis works or describing the nursing care process as well. Let's quickly move toward the question number 2. Next question is explain the 4 primary types of writing. So these 4 are very important one. Expository, we have just discussed it. Next one is descriptive, narrative, persuasive with example. So expository, explain facts. Descriptive, use sensory details. As an example, you can describe a journey you have been, or you can describe a hotel you have visited as well. Narrative tells a story. Okay, you can tell your own personal experience as well, or any incident which happened with you. Persuasive, convince readers. Mostly जो आपके articles होते हैं या editorial होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वो persuasive होते हैं, या आपकी जो advertisement होती है. Example a narrative about hospital experience. Persuasive ऐसे on vaccination importance. Okay. Next question number 4. What are the characteristics of effective expository writing? So not very important questions, but you have know it that clear thesis statement होनी चाहिए इसके अंदर, logical organization होनी चाहिए, coherence होना चाहिए basically, objective tone होनी चाहिए, biased tone नहीं होनी चाहिए, fact based के ऊपर ये आप जितनी भी information लिखी होनी चाहिए, use of evidence, coherence, clarity and formal language. So students, if you just memorize these main points and you explain these points later on one by one, so you will have good marks. Okay, your answer will be 100% accurate. So these 35 or 37 questions will make sure that you have gone through all the questions, you have covered all the syllabus as well. Next one is explain the advantage of expository writing. So of course we all know that improves critical thinking, enhance clarity, develop structure, writing useful in academic purpose. So we are question number 5. Okay, not important questions, but paper point of view के हवाले से as we are discussing, so when we will repeat a question again and again, so it will be in your mind at the day of your exam. Next question number 6 is the elements of expository writing. That is really very important question, students. Okay, so I'm gonna like not only highlight it, I'm gonna make a circle for you people. That question is very important one. So explain the elements of expository writing. कौन से expository writing के important elements? First one is the thesis statement, introduction, body paragraph, transition and conclusion. Okay, so these are the elements of part of an essay. Not only expository writing, you can say these are the important components of every essay. So elements include thesis statement. You know, the first line of an essay is known as a thesis statement. Introduction, body paragraph with evidence, transition and conclusion. Okay, now describe format structure of expository writing, introduction, body and conclusion. Same question है. Introduction के अंदर of course you have to write on the thesis, प्लस इंट्रोडक्शन में आप उसका बैकग्राउंड लिखेंगे या कोई एनी रेलिवेंट एग्जांपल या वो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे जो कि आगे बॉडी के अंदर आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी होती है स्टूडेंट. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद कैरी थीसिस स्टेटमेंट विद बॉडी विद बैकग्राउंड प्लस बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपको पता है कि यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ विद द सपोर्टिंग पैराग्राफ एंड हियर द मेन थिंग इज़ द टॉपिक सेंटेंस. हर पैराग्राफ को आपने एक टॉपिक सेंटेंस से शुरू करना एंड दैट टॉपिक सेंटेंस विल बी डिस्कस्ड इन द होल पैराग्राफ. Last section is the conclusion, the summary and restated the thesis as well. Moving on, these two question number 6 and 7 are very important, which I have made a circle around it. Write a short note on objective tone and why it is important in expository writing. Basically
आपका जो ये क्वेश्चन बेस कर रहा है कि हम कौन सी टोन यूज़ करें एक्सपोजिटरी राइटिंग के अंदर। ऑफ कोर्स फैक्ट बेस होनी चाहिए, आपकी रियलिस्टिक टोन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इट शुड बी न्यूट्रल। ओके, किसी भी चीज़ को आप इस वजह से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन ना करें ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पर्सनल एंड लाइक्स। ओके, सो यू हैव टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टोन होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव टोन मीन्स राइटिंग विद आवर पर्सनल बाइस और इमोशनल लैंग्वेज। इट इंश्योर्स क्रेडिबिलिटी एंड फैक्चुअल प्रेजेंटेशन। सो इमोशनल लैंग्वेज किसके अंदर आ जाती है आपकी? अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वो यूज़ इमोशनल लैंग्वेज इन परसुएसिव ऐसे के अंदर या नैरेटिव ऐसे के अंदर हम मोस्टली यूज़ करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्रोनोलॉजिकल काज इफेक्ट, कंपेयर कंट्रास्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। दैट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्रोनोलॉजिकल, of course you have to follow a sequence of time, order of time होना चाहिए cause and effect में। reason and result, first you have to write on the cause and next you have to write on the effect। compare contrast, similarities and differences between two objects हो गया या two things हो गए जिनको आपने differentiate करना हो the basis of the similarity and difference। problem and solution, again you have to first identify the problem and then you have to suggest a specific solution related to that problem as well। okay, next one is explain the role of evidence and example in expository writing। not important questions, of course evidence supports argument and strengthens credibility। basically if someone is having a doubts about a specific issue तो आपका जो evidence होता है वो उसको more ज़्यादा strengthen करता है, जो लोग होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इफ आई से, बट वी हैव एडेड दिस क्वेश्चन जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। एक्सप्लेन डिस्क्रिप्टिव एक्सपोजिटरी राइटिंग विद एग्जांपल। डिस्क्रिप्टिव एज वी नो वी हैव टू एक्सप्लेन एन इवेंट based on the sensory detail। So descriptive expository writing explain characteristic of subject objectively, example describing hospital equipment, describing a city, describing object which you have used। suppose कि you have bought a new mobile phone and आपने उसके बारे में उसको describe करना है। next one is explain process analysis step by step, a very important question। process analysis explain step in order। okay, example step of administrative injection। okay, how does it act basically। next one is explain compare contrast writing with example। these are very short questions which you have already been studied, जिनके आपको आंसर्स आते हैं। compare contrast show similarities and differences, example देखिएगा public versus private hospitals हो गया। and next one explain cause and effect writing with example, cause and effect explain reasons and result, example cause of stress among students। now if these questions come in your paper as well for specific essay question as well, so if you will follow the structure or the pattern which has been given all over there, so you can score very good marks। okay, so if the essay comes regarding problem and solution, so you have to follow this structure। if the essay is about cause and effect, you should follow this structure। and if the essay is about contrast writing, तो आपने इस structure को follow करना है students। okay, so quickly move toward the next question। I told you there are total 37 questions and the last question is very important in which we have arranged specific questions for you regarding ethical consideration, plagiarism के हवाले से वो cover करेंगे section अब। so next question number 16 is about explain definition writing with example। definition as you know that it explains the term, एग्जाम्पल देखेगा उसकी डिफाइनिंग पेशेंट सेंटर्ड केयर एज वेल। ओके, सो बेसिकली इट मेक्स द डिफ़िकल्ट वर्ड वेरी इजी वन। ओके, जो कि आपके डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं जो कॉमन नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते उनको इजी करके बताता है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन राइटिंग विद एग्जाम्पल्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज आइडियाज़ इनटू कैटेगरीज, एग्जाम्पल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस यू हैव टू कैटेगराइज। सपोज करें कि हेल्दी डाइट के हवाले से अगर कोई आप लिस्ट बनाना चाहें तो यू विल इंक्लूड ऑल दोज कंपोनेंट्स विच कम अंडर दैट स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ गुड डाइट और हेल्दी डाइट यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इफ यू टॉक अबाउट दैट इज अबाउट एक्सप्लेन द स्टेप स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस। सो
Now that question is very important. You have to go through in detail as well. But here there is a short description. Writing stage में सबसे पहले pre-writing, then drafting, revising, editing, and final stage is known as publishing. So one by one, pre-writing is the first stage. Before writing, you just think about the idea or the topic about which you want to write down. इसके अंदर आपके if we talk about pre-writing के अंदर, you are not supposed to worried about grammar. It is just based on idea, you can say. Okay, like you have to just make an idea, okay, and start writing about that idea later on in the later stage of your writing. Okay, so here, as I told you, pre-writing is the first stage of writing. इसके अंदर आप आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. यू कम अप विद ऑल दोज पॉसिबल ऑप्शंस. माइंड मैपिंग करते हैं. यू जस्ट मेक और क्रिएट एन इमेज इन योर माइंड बिफोर राइटिंग. ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर प्री राइटिंग, माइंड मैपिंग, ओके, व्हाट डू? यू हैव टू क्रिएट अ ड्राफ्ट. ये क्या होता है? सेकेंड स्टेज ऑफ राइटिंग होती है आपकी, जो कि ड्राफ्टिंग होती है. इसके अंदर you just take a pencil and a notebook and start writing those ideas which you have just created in the stage of pre-writing. Here in drafting, what you are going to do is that you have to like, you are not supposed to or worried about any grammatical mistakes here, any spelling mistakes as well. So just come up with all those ideas which are in your mind. Okay, so you will have to write down rough draft form, and after writing down the drafting, the next stage is about revising. Revising is very important. So basically, अगर आपने ड्राफ्ट लिख लिया है तो आप उसको रिवाइज करेंगे. यू हैव टू फाइंड आउट इज़ देयर एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक नाउ, इज़ देयर एनी स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, रिमूव करेंगे. एडिटिंग एंड द पब्लिशिंग इज़ द लास्ट stage of writing process. So here in publishing, what you do, whatever you have written, you have to publish in the form of book, and this will be the final form of your writing. Okay, so next question number 19, differentiate between revising and editing. Of course, we have just studied about it, discussed about it as well, that revision में क्या होता है, आपके सामने कोई ड्राफ्ट है, आप उसको रिवाइज करते हैं और उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं आप उसको अंडरलाइन करते हैं. ओके, एंड एडिटिंग में क्या करते हैं, आप उन एरर्स को रिमूव करते हैं. ओके, सो रिवाइजिंग इम्प्रूव आइडियाज़ एंड स्ट्रक्चर, एंड एडिटिंग करेक्ट्स ग्रामर एंड लैंग्वेज एरर्स. क्वेश्चन नंबर 19 इज also completed. Next question is question number 20. देखिएगा, explain proofreading and write rules point for effective proofreading. Okay, so there are the most important proofreading points. Proofreading checks final errors. Rules: read slowly. So these are the important rules about proofreading. Read slowly, check spelling, punctuation, grammar, and formatting as well. Okay, next one is explain brainstorming. So we have just discussed brainstorming means to come up with all the possible answers related to a question. Okay, you have to just add up everything जो कि किसी भी टॉपिक के साथ रिलेट करती है, वो आपकी brainstorming कराती है. Okay, brainstorming generate ideas individual if someone has to make एनी आइडिया इंडिविजुअली. ग्रुप में बाज़ दफ़ा आपको, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास एक्टिविटी होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, उसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं. सो एवरी वन कम्स विद ग्रुप आइडियाज एज वेल. नो क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन क्वांटिटी, इनकरेज क्रिएटिविटी एज वेल. So these are some rules as well. Explain free writing. Again, brainstorming or pre-writing is a part of free writing, as the free writing involves continuous writing without worrying about errors, helps generate ideas. Okay, so we have done with free writing definition as well. Next is explain mind mapping. Mind mapping is a visual organization of ideas around central topic using branches as well. Okay, so again, important questions. Student must know what does mind mapping mean. Explain listing. Listing is writing ideas in bullet or number form for organization. Like you have to write down alphabetically or in a sequence or numerically name of the items or things in the form of numbering. Okay, from top to bottom in ascending or descending order, you can say. Next one is explain questioning.
So basically, before writing, you have to think about the topic and all those possible questions, like why are you writing, who is the audience of that uh, writing material as well, like what is the purpose or what is the need of writing as well, and when will you have to finalize your writing as well, okay, and how you are going to publish it as well, either in the form of booklet or either it is an online material as well. So WH question means, WH means when, where, how, who will read the content which you are writing as well, okay. Next, that's good. We are at question number 26. Define an essay and explain part of an essay as well. We have just gone through it as well in the question of expository writing के जो important components होते हैं. Similarly, essay के हवाले से भी an essay structure, writing with introduction, body and conclusion. What is hook? A very important question. It has come in the last UHS. I am writing down here important as well. It has come in the UHS last year final term exam as well. Hook is eye-catching statement, or you can say an attention-grabbing opening. It can be a quotation, it can be a statistic, it can be anecdote as well. Anecdote means कि कोई अपना personal story भी share कर सकता है उसके अंदर. In fact, if you share a statistic that those people who has some specific issue, how can they have they can cure from that disease as well, based on fact number की बात की अगर हम बात करते हैं तो उसको, okay. I'm not going in detail because I want you to cover this whole lecture within a very short and quick time as well, okay. So next question, if you have any problem or you want detailed answers, so you can ask in the comment section as well. Define thesis statement and explain its parts as well. Again, thesis statement is the main idea, central idea. What does it do? आपकी जो ऐसे की फर्स्ट लाइन होती है वो थीसिस स्टेटमेंट की होती है. थीसिस स्टेटमेंट इज डिफाइन योर होल ऐसे, कि आपका जो ऐसे है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके. इसके अंदर आप स्पोर्टिंग रीज़न, लेट्स सपोज के इफ द क्वेश्चन इज देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी, डू यू एग्री और डिसएग्री? इफ यू एग्री, your thesis statement, yes, there should be equal number of male and female students in university. If you disagree, you will say no, there shouldn't be, okay. So next question is explain type of thesis statement. Argumentative, analytical, expository with example as well. Expository explains, argumentative expository explains, argumentative argues, analytical analyze. So ये आपको माइंड में रखना है. expository means to explain a process. आर्ग्यूमेंटेटिव आर्ग्यूज करता है बेसिकली, ऑलरेडी कोई सिचुएशन प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, उसको आप क्या करेंगे, आर्ग्यू करेंगे. एनालिटिकल एनालाइज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन देखिएगा, राइट द रूल्स करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट. स्ट्रॉन्ग थीसिस इज क्लियर, स्पेसिफिक, फोकस, कंसाइज एंड रिफ्लेक्ट ऐसे कंटेंट एज वेल. वेरी इंपॉर्टेंट वन. एक्सप्लेन की एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ. अगेन पैराग्राफ के जो की एलिमेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई एम राइटिंग आई ओवर दियर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट लाइक हुक स्टेटमेंट हो गई, यहाँ पे आपका थीसिस स्टेटमेंट, यहाँ पे पैराग्राफ का डिस्कस हो रहा है. सो पैराग्राफ इंक्लूड्स टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ. स्पोर्टिंग सेंटेंसेस, स्पोर्टिंग डिटेल्स, कोहेरेंस, यूनिटी एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस एज वेल. जैसे ही आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी स्टार्ट की जो लाइन होती है वो आपको टॉपिक सेंटेंस कहलाता है. उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए आपने सपोर्टिंग डिटेल्स और एविडेंस ऐड करना होता है विद एग्जांपल्स, एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड योर पैराग्राफ. Differentiate between thesis statement and topics, a very important question again, okay. You can clearly see a topic sentence is introduces paragraph ideas, and thesis statement the main idea of entire essay, okay. You all know it, a very easy question. Define cohesion and coherence and differentiate between them with example as well. No, very important questions again for paper point of view. Cohesion links sentences grammatically and coherence ensure logical flow of ideas. So basically cohesion से हमें क्या फ़ायदा होता है कि उसके अंदर अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं, पढ़ने वाले को आसानी होती है. और कोहेरेंस उसके लॉजिकल फ्लो को, उसके सीक्वेंस को
मेक श्योर करते हैं कि जितना भी हम लोग डाटा लिख रहे हैं इट शुड बी इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर वो होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टाइप मेथड ऑफ कोहेजन. ओ, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, if I talk about, so first one we have lexical cohesion. Lexical cohesion में क्या होता है, there should not be repetition होनी चाहिए. रिपीटिशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. सपोज करें कि अगर आपने किसी करेक्टर का या पर्सन का नाम ऑलरेडी यूज़ किया तो उसको आप दोबारा यूज़ ना करें, उसकी जगह आप क्या यूज़ करें, प्रोनाउन यूज़ करें. ग्रामेटिकल कोहेजन में यू हैव टू यूज़ प्रोनाउंस. एंड कनेक्टर्स से मुराद क्या होता है, यू हैव टू यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स. You have to arrange the events in a sequence. Therefore, however, suppose करें the dog was hungry because the dog was barking because the dog was hungry. Okay, so you have to use connectors. Okay, you have to make a sense. Connectors mean transition. Therefore, before, after, that's why, although, but, yet, these are the connectors. Okay, and please excuse for the previous example which I haven't pronounced correctly. Basically, I want to say that dog was furious, it means the dog was hungry. Okay, that is the main reason कि वो क्यों बार्क कर रहा था. Okay, next question देखिएगा. There is question number 35. Oh, that's good. We are about to end the whole lecture. Differentiate between editing and proofreading. Editing, correct grammar. Proofreading checks final minor mistakes as well. Write a short note on plagiarism and ways to avoid it as well. Okay, now that is very important questions. Okay, for paper point of view, plagiarism is using others work without credit. Avoid by proper citation, quotation marks, and APA style as well. So this question has already come in the last year exam of UHS, and this time it is again very important. So what does plagiarism means? If you are using someone's work without the permission or without giving them proper reference or citation, it is illegal in modern writing. Okay, so plagiarism is using others' work without credit, and avoid by proper citation, quotation marks, and APA style as well. Now, as most of the students they have problem in the last question, that is about write APA citation. APA citation for single author, for two authors, more than two author, organization, as author, unknown author, journal, or article. First of all, student, citation means giving reference to an author when you have to add something within a writing, within an essay. बेसिकली जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, उस राइटिंग विद इन अ राइटिंग, आप उस ऐसे के अंदर अगर किसी ऑथर को क्रेडिट देना चाहते हैं तो वो साइटेशन होती है. इफ़ यू वांट टू गिव अ क्रेडिट टू द ऑथर एट द एंड ऑफ द बुक, ओके, वो आपका क्या कहलाते हैं, रेफरेंसिंग कहलाते हैं. तो अब वन बाय वन हम इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है सिंगल ऑथर बुक. ठीक है, अगर आपका सिंगल ऑथर है तो आप उसको किस तरह से उसकी प्रॉपर उसको क्रेडिट किस तरह से देंगे, उसकी साइटेशन किस तरह से करेंगे. हियर इज सिंगल ऑथर नेम A for author basically, and A is next. A is the initial of that author. You have to add year, title of the book, and publisher. Here it is written single author book. Okay, so that is, so here Brown is the last name of that author. In we are talking about APA style citation. Okay, so Brown is the last name. T, student, what does T means? T means the initial of that author, and year of publication is 2020. So here you have to Brown, comma, the last name of that person might be you can say Tim, T for Tim, and 2020 is the year, and you have to close the इसको क्लोज कर देना ईयर्स को. एंड एकेडमिक राइटिंग स्किल्स, और उसके बाद जो ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मीन्स तो पब्लिशर क्या है. हियर वी हैव डिस्कस वन ऑथर. सिमिलरली क्वेश्चन इज अबाउट टू ऑथर्स. टू ऑथर्स को आपने किस तरह से डिस्क्राइब करना है, सेम मेथड फॉलो करना है आपने. हियर इज ऑथर A means A relates author. A next A is the initial, and author B, second author. B is the name, and here B is the initial, and the year, title of the book, and publisher as well. So quickly, ये आपके सामने Simit J. Simit, what does Simit mean? Simit is the last name of the author, and J is the initial, and Clark,
Clark here is the last name of second author. R is the initial, year of publication, okay, and name of the book is Effective Communication Nursing, Pearson Education. Pearson Education क्या है उनकी जो publisher है, okay. नेक्स्ट वन देखिएगा, मोर देन टू ऑथर्स की बात हो रही है आप, ओके स्टूडेंट्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज कि मोर देन टू ऑथर्स को किस तरह से करना है. सेम फॉर्मेट को रखना है आपने. हियर वी हैव ऑथर ए शोज फर्स्ट ऑथर, ऑथर बी मीन्स सेकेंड ऑथर, ऑथर सी मीन्स जो आपका तीसरा ऑथर है. ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या था, टाइटल ऑफ द बुक एंड पब्लिशर एज वेल, ओके. नीचे देखते हैं हम उनके एग्जाम्पल को. जॉनसन एल इज़ द initial, Miller is the last name of second author, P is the initial, and similarly Adam is the last name of the third author, K is the initial. Year of publication 2021. Research methods in health sciences, McGraw-Hill is the name of the publisher company. Okay students, so next question is organization as an author as well. So organization से मुराद क्या होती है? As you know that there are multiple organizations. सपोज करें कि आपका कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या अगर हम बात करें जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं कोई अवेयरनेस कैंपेन के लोगों के लिए, तो उसके अंदर आ जाएगा वो. उसके एग्जांपल देख लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन नेम आ जाएगा आपका. हेयर फॉर रेफरेंस वी हैव एडेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव पब्लिश एन आर्टिकल इन 2020 अबाउट ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, एंड प्रेस क्या थी आपकी, WHO प्रेस थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए ना आपने एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन और क्रिएट. लेट्स हैव अ न्यू क्वेश्चन. यू हैव टू आंसर, okay. You can create a company ABC. You can here world health organization की जगह you can create ABC company, that is Alpha Bravo company, okay. year of publication आप इसका लिख सकते हैं. मैं एम राइटिंग ABC, C फॉर कंपनी हो गया, एंड डॉट हो गया. उसके बाद year of publication 2026 हो गया, okay. You have to close it, okay. Now if you don't know the name of the report, okay, you can write down anything, okay. What are the habits of successful people, it can be the name of article. एंड प्रेस किसने किया उसको, अगेन आप उसका ABC कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं. ABC पब्लिशर आप कर सकते हैं, ये ABC प्रेस कर सकते हैं उसको, ओके. Now here is important question, unknown author as well. So in that situation, if you don't know the name of the author, you do not add it without proper clearance, okay. So you have to add just the name of the book or the title of the book as well. Suppose here, fundamental of the academic writing, year of publication, and Cambridge University Press. If you don't know the name, somehow people use anonymous name as well. They write down anonymous instead of the writer name if they don't know, if they are not sure about the exact name. So journal articles mean those articles which you read in book, magazines, newspaper के अंदर आप पढ़ते हैं. So author A is the last name, A is the initial. टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जनरल नेम से क्या मुराद होते हैं, आपने जो मैगज़ीन या जो न्यूज़पेपर होगा उसका नाम क्या था, उसका वॉल्यूम इशू. आपको पता है जितने भी आपके मैगज़ीन्स होते हैं उनके एक स्पेसिफिक एडिशन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मंथली, ईयरली बेस के ऊपर होता है. पेज नंबर क्या है, कौन से पेज के. एंड हियर स्टूडेंट्स, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच स्पेसिफिक स्टाइल वी नीड टू ऐड पेज नंबर, ईदर इन APA, MLA or Chicago. Ahmed is the name of the author's last name, S is the initial, 2021 is the year of publication, and the name of the article in the journal is the impact of clinical training on nursing students, Journal of Nursing Education, and page number 45 हो गया उसका, ठीक हो गया. And that is the edition number. So students, I have tried in this lecture to cover all the important questions for UHS second semester final term. There are total 37 questions which I have tried my level best to add up for your exam preparation. Now if you have any question related to this question, you can add in the comment section. I will answer each question. And secondly,
if you find any question difficult and still there is any confusion regarding your preparation, so you can write down in the comment section. We will make a video according to that topic as well. But for me, if you go through all this topic which I have given to you people here, and only you need to go through these answers, these are sufficient and enough. And trust me, after going through this question, you will have to cover your 50% of the syllabus very easily. And I will try, if you will recommend or you will suggest me the next video, if there are some question left, so write down in the comment section and we will make a new video as well on those topics. So thank you students for watching this video, and I really appreciate if you have any feedback, any suggestions to grow this channel and to assist you students. If you have any other problem related to your exam preparation, so you can contact me in the comment section. So thank you, and lastly, don't forget to subscribe and like. Thank you.